मम्मी को मार दिया, मेरे पापा को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, कुछ भी ना है। मेरे हस्बैंड के साथ आया इंडिया में। मेरे एक क्लास फ्रेंड थे लड़के, और मेरे जो हम लोग रहते थे वहीं से थोड़ी दूर थे। तो उस हालत में वो कहाँ गया, कहाँ ले गया, उनकी पता भी नहीं, अभी तक उनकी पता नहीं चला वो कहाँ है। हमारे पापा को मार दिया था। एक इलाका से एक इलाका में वो सामान बेचने के लिए जा रही है, उस टाइम मेरे पापा को भी मार दिया था। वहाँ तो लेडीज़, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, लड़की सबको बुरा भी करके बहुत खतरनाक बुरा किया था। वहाँ जुल्म किया था, कत्ल किया था। हम देख के वो बहुत डर लगा था। वहाँ हम लोग को भी काटने के लिए, मारने के लिए आया था। तो हम टाइम मिला था, रास्ता मिला था, चोरी करके हम जाम रखाने के लिए बांग्लादेश आया, नदी पार करके। The Rohingya people has been called the most persecuted minority by the United Nations. Though they have been living in the Rakhine state of Myanmar for centuries, they have been the victim of state-sponsored persecution since 1962, when Burma became a military state. On the 25th of August 2017, a deadly crackdown by the Myanmar army following an ARSA attack on security personnel across Rakhine forced around 700,000 Rohingya people to flee their homes in Myanmar. The United Nations called this crackdown a textbook example of ethnic cleansing. Women were the worst victim of this war against humanity. I cannot forget the stories I heard in Cox's Bazar, when distraught woman gestured to a mother cradling a young baby who was conceived as a result of rape and told me, and I quote, "We need security in Myanmar and citizenship, and we want justice for what our sisters, our daughters, our mothers have suffered." To this day, more than 900,000 Rohingya people has fled Myanmar. Most of them sought refuge in neighboring Bangladesh. However, in the last few years, a lot of Rohingya refugees have crossed into India in search of a better life, education, health and opportunities. Did they get what they are looking for? Did the women who left their homes in fear find shelter in India? What has life offered these Rohingya refugees in this new country? I traveled to India to find out. India has about 40,000 Rohingya refugees at present, out of which only 16,500 are registered with the United Nations High Commissioner for Refugees. They live in camps across Indian cities, including Jammu, Hyderabad, New Delhi and Nuh in the state of Haryana. My destination was Madanpur Khader in the southeastern part of Delhi. The refugee camp here houses more than 200 Rohingya refugees cooped up in 55 shanties crammed under a temporary shade. Here, I first met Zuhara, a young girl of 18 who showed me around and introduced me to Fatima, Sanjida, Taslima and the two Minaras. All of different age, but fate has brought them all together. Each of these women is witness to the persecution of some family member or relative in Myanmar. All of them fled the country between 2012 and 17 to Bangladesh, then crossed the border and came to India seeking refuge. What they got was far from something that they can call home. यहाँ पे रहने के लिए बहुत छोटा जगह है। हम लोग 6 लोग हैं, 3 लोग रहेगा तो 3 लोग
दूसरा जगह में रहना पड़ती है। फिर ऐसा में बच्चा को भी संभाल नहीं पा रही है। 3 बच्चा को यहाँ पे रह पाएगी, 2 बच्चा अलग से रहना पड़ रही है। टाइम से बच्चा को उठा नहीं पा रही है, बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पा रही है, बच्चा सही तरीके से साफ सुथरा रह नहीं पा रही है। जब बारिश होता है, बारिश गिरता है और छोटा सा घर है, 5 मेंबर है, बहुत मुश्किल है यहाँ रहना। The present camp, which was set after the original one was destroyed by fire in June 2021, is just a clutter of rooms or shanties separated by walls made of cloth. These shanties at Madanpur Khader are a mere 9 to 10 square feet enclosures housing whole families of approximately 5 to 6 people. ये रहने की जगह भी नहीं, ये मजबूरी में 2-3 दिन रहने की जगह है। इस जगह में हम लोगों को 3-4 महीना हो गया, कम से कम 3 महीना हो गए यहाँ रह रही है। ना तो यहाँ बाथरूम है, ना तो टॉयलेट है, ना रहने की सही से जगह है। यहाँ सब घुस जाते हैं, अगर बारिश होती है तो पानी भी घुसते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। All these shanties are somehow equipped with a bed where the whole family sleeps together. Daily lessons to daily prayers, life somehow crams into the shanties. Each of these shanties has a small kitchen space that the women have managed to fit in. A small enclosure made with some ragged piece of cloth serves as a bathroom in these 10 square feet shanties. However, there are no toilets on the camp premises. आप टॉयलेट कहाँ पे जाते हैं? जंगल में जाती है बाहर, वहाँ पे भी संसन कार्ड का बराबर में भी सरकारी टॉयलेट से वहाँ भी जाना पड़ता है। नहा धोने का? नहाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, अंदर नहाते अपना अपना। I was also told that the camp does not even have any source of water supply. पानी कहाँ से मिलता है? पानी का टैंकर आता है, शाम का टाइम टैंकर से ले लेता हूँ। एक बार ही आता है पानी? एक बार आते हैं। अरे यहाँ पे बाथरूम कहाँ जाते हो? है बाथरूम कोई अलग? कहाँ, वहाँ गाड़ी लगा हुआ, उसमें कितना दिक्कत है जाने का, सड़क पार होके जाना पड़ता है, बहुत गाड़ी का भी डर लगता है। और एक बाथरूम में कितने लोग जाते हैं? सारे लोग जाते हैं। सारे मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ 53 परिवार है, सब जाते हैं। 200 से ज्यादा लोग एक ही बाथरूम में जाते हैं? हाँ, एक ही है। एक टंकी पानी लेकर आ रही है, फिर आधा घंटा पानी दे रही है, फिर जा रही है, ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, रह जा रही है। फिर बाल्टी वगैरह लेकर 2-3 बाल्टी लेकर पानी ऐसे रखना पड़ रही है। फिर एक कपड़े कैसे दूँ? I went to look for the temporary toilets provided by the Delhi Urban Shelter Improvement Board that the women talked about. It was quite a walk from the campsite. Zohra explained why people at the camp, and especially the women, do not use the toilets. जोहरा, ये जो टॉयलेट्स है ये कैंप से कितना दूर है? ये 300 मीटर दूरी पर है ये टॉयलेट। कैंप से 300 मीटर दूर है। और कैंप की औरतें आती हैं यहाँ पे? जी नहीं आती, क्योंकि वो डरते हैं यहाँ आने से। बीच में रोड पड़ते हैं जो फर्श करने में दिक्कत भी होते हैं और सेफ भी नहीं है औरतों के लिए। और जो बाथरूम है वो भी गंदे हैं, साफ सफाई नहीं करते कोई। और औरतें ज़्यादातर उनके पीछे झुग्गी के पीछे की गली में जंगलों में जाते हैं, क्योंकि वो करीब भी पड़ते हैं और वो लोग सेफ समझते हैं। तो मतलब कैंप के औरतें बाथरूम यूज ही नहीं कर पाते हैं? नहीं, वो जंगलों में जाते हैं। और जो आदमी लोग हैं वो भी जंगलों में जाते हैं, ये टॉयलेट यूज़ ही नहीं करते हैं। यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं उनको बताया क्या ये? कौन बताएंगे? Both Fatima and Zohra said that the women from the camp are scared to cross the road to go to the toilets. But why? और दारू पीता है, गांजा भी पीता है, ऐसे गुंडा खांदा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अगर अकेला लेडीज मिलेगा तो वहाँ क्या करेगा? आप कुछ सोच ले। इंडिया सब लोग अच्छा नहीं है, सब लोग एक ही बराबर नहीं है, सबका नज़र एक ही नहीं है। तो यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। हो गया ऐसा हादसा हुआ भी है पिछली महीने।
I inquired at the local police posting located at the gate of the camp regarding the incidents that Sanjida mentioned, but they refused to comment. I then asked Zohra to take me to the side behind the camp, which the women and most of the people use as a toilet. I did not expect what was coming my way. The only way to the site was a walk over the boundary wall of the camp. With no access to toilets, a proper bathroom and regular supply of water, how do these women maintain their health and hygiene? How difficult does it get for them to pull through the days of their periods? जब पीरियड्स होते हैं तो महिलाओं को नहाने की भी ज़रूरत होती है, तो नहाने की तो जगह नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ते हैं। पहले जैसा तो हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम लोग साफ सुथरा रहने की कोशिश करते हैं। Lack of water and proper toilets in turn takes a toll on the health of these women every day. कभी बीमार पड़े हो टॉयलेट के लिए? टॉयलेट्स के लिए तो यहाँ तो हर घर में बीमार है, कुछ लोगों को बुखार और खांसी जुकाम है और ज़्यादा बीमारी हर घर में बीमार हो रहा है इसी वजह से, गंदगी के वजह से। और औरतों का कोई समस्या टॉयलेट के लिए? टॉयलेट के लिए तो औरत के लिए नहाने के लिए टॉयलेट्स के लिए बहुत परेशान है और हर तरह का परेशानी है यहाँ। साफ सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं? कूड़ा वगैरह दूर फेंकना, इतना दूर जाना पड़ता है। घर पे कूड़ा वगैरह हर दर्जा में कूड़ा का डिब्बा है, उसी में से मक्खी मच्छर ज़्यादा हो जाती है, फिर अंदर घुसता है, ज़्यादा बीमारी इसीलिए तो फैल रहा है यहाँ। The camps are located in area where dump yards are very near, unhygienic situation. Clean water is a luxury there. Having soap is luxury there. Having sanitizer is luxury there. I met Ali Zohar, a fellow of the Institute on Statelessness and Inclusion, to talk about the distress that these women go through while seeking health and medical assistance. Himself a Rohingya refugee, Ali lived at Madanpur Khader from 2013 to 18 and was a health volunteer with the UNHCR. Pregnant women face the most challenges, because the hospitals that are accessible for them is around 40 kilometers away, and these families, they're dependent on daily incomes, daily wages work, and if they have to travel to access health facilities, they have to spend more than earning of a day of their income. So that is one of the biggest challenge, for women in accessing health. Most of the women, they don't speak Hindi. They can't even express how they are suffering with their health issues. Even if the women somehow cross the language barrier, there remain other hurdles for them to pass. Even to give birth, they don't want to visit hospital. They ask for passports. How can an institution expect a passport from a refugee who have fled decades of persecution, systematic persecution? हमारा छोड़ो, हमारा बच्चा के बारे में सोचो, वो क्या है, हमारा तो बेकार हो गया। अभी हमारे जो बच्चा का जिंदगी आ रहा है उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, हमारे बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। It started raining heavily that evening when I left the camp. As I looked out from the dry safety of my taxi, I remembered what Minara and Fatima said. Rainwater was probably flowing into their shanties then. Some of them probably did not get a place to sleep that night. Yet, they would have gone out the next morning to fight another day. They fight, wishing for a better future for their children. The only weapon they look for is education, so that their children can find a better way of life. Hope wakes these people up in the morning and pulls them through the day. Hope
keeps them alive.